कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत की बात है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत की बात है? अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी झुक जाती है। Good morning and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Friends, we have started this series with the sole purpose of growth, change of mindset from restricted mindset to the growth mindset, from financial accumulation to financial stability. Financial accumulation मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, आने दो, लेकिन उसका विनियोग planned comfort level should be till the end of the life. That is financial stability. So we are moving from this restricted mindset to the growth mindset, for which the primary aspect was to set a goal. We have understood what is the importance of setting of the goals. So also we have understood the importance of keeping the goals and moving towards the goals on daily basis, small steps daily. We should not give up our goals just because of some setbacks or failures, because now we have learned in the process that failures are the opportunities to learn for. We can learn many things from the setbacks. We should never wait for the perfection. That is what we have also learned. Now, while we were moving towards our goals, we came across an interesting term called limiting belief. I have made a separate video on limiting belief. Why that is important? Because this limiting belief itself is preventing you from your growth. It is a big hurdle, एक बड़ा speed breaker है वो. It is not allowing you to be on the runway to your success, friends. Hence, we have to change that. We have to remove those limiting beliefs that are ingrained in your mind. मतलब जो मन में धाराएं बना के रखी हुई है, पता नहीं कब हो गई, कैसे हो गई, नहीं मालूम है, बट जो मालूम है वो है कि हमने उसे लॉजिकल एंड तक एड्रेस नहीं किया है. दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज डाउटिंग आवरसेल्व्स, और वी आर ऑलवेज रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स from moving forward or moving towards our growth. Hence, I took efforts to jot down every possible limiting belief. क्या क्या मन में आ सकता है या कैसे धारणाएं बन सकती है, and I have tried to define them, address them, what are their drawbacks, and how you can overcome them. Now, this becomes the important part for this series, because unless and until your mind is wiped off all these limiting beliefs, it is very difficult to proceed further at a higher speed. No doubt we will be proceeding further, but the speed will be slow. तो स्लो स्पीड से हमको नहीं करना है, हमको रनवे पे भागना है, ग्रोथ होनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना है, सेल्फ डेवलपमेंट होनी है. दैट इज आवर प्राइमरी गोल, एंड हेंस we we are addressing the limiting beliefs in detail. Simultaneously, we are also taking care that whether we are moving forward on these limiting beliefs also, I am addressing how you can overcome them and move forward towards your goals. क्योंकि अगर मन में धाराएं बन गई है तो मन आपको, आपके ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता रहेगा, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते? इस क्यों का जवाब हमने सोचा ही नहीं था. मन में धारा बन चुकी थी कि नहीं नहीं ऐसा, ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी. व्हाई? क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं है? ये जब तक हमने पूछा नहीं था व्हाई, ये सवाल हमने नहीं पूछा था, हमारे पास जवाब ही नहीं था. हमने धाराएं बना के रख दी थी, हम ऐसे ही जिए जा रहे थे. तो सक्सेस was taken away by some other people, and then we were comparing ourselves with others. That is what we were doing. Second wrong thing. एक तो लिमिटिंग बिलीफ खुद के मन में बना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई और कर रहा है तो उससे कंपेयर करो, वो उसका देखो अच्छा हो गया, तुमने क्यों नहीं किया? अब ये एड्रेस ही नहीं किया था. We had not addressed this limiting belief, and hence limiting beliefs are important to be removed from mind. So today's limiting belief is that there is no point in asking for what I want. नहीं, हम बचपन से जैसे बड़े होते गए तो कई डिसीजन हम पे थोपे गए. जैसे मैं हमेशा ये बताता हूँ कि तुम्हारा स्कूल जाना,
You didn't choose the school. Your father mother chose the school. You were not choosing the schools or colleges. I can understand. Yes, nowadays you have got that option. You can choose the college based on the marks. बट नहीं तो माता पिता ही बोलते थे बाबा तू इधर ही जा. नहीं नहीं तू अभी बाहर मत जा. नहीं यू कैन नॉट गो देयर बिकॉज देयर आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर. तो तुम्हारे ऊपर वो जिम्मेदारियां थोपी गई थी लेकिन उसके साथ सॉल्यूशंस नहीं दिए थे. तो ग्रोथ नहीं हो पाई. आप एक सीमित करके रह गए. तो ये जो सीमित होना है दैट इज बिकॉज यू हैड दैट लिमिटिंग बिलीव देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग फॉर व्हाट आई वांट. और मुझे पूछा ही नहीं तो मैं क्या बोलूं अभी. मुझे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है तो वो बोल रहे हैं तो कर रहा हूं. तो कब तुमको ध्यान में आएगा. कब ये लिमिटिंग बिलीफ निकालोगे. नाउ व्हाट दिस लिमिटिंग बिलीफ इज. It holds someone back from expressing the desires or seeking what they want for truly want in life. क्या चाहते हो जिंदगी में. क्या बनना चाहते हो. Where you want to take your life along. How or you want to live the life as per others wishes. That is what you have to decide. अगर कहाँ जाना है ये पता नहीं है तो यू आर अ वॉन्डरर. तो क्या वो इसने बोला इधर जाओ उसने बोला उधर जाओ चल दिए. हेंस ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने मन से वो निकालोगे नहीं दिशा मिलना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स. सो दिस बिलीफ सजेस्ट दैट द माइंडसेट इज ऑफ डिफीट और रेजिग्नेशन. अभी नहीं अभी चलो मैं छोड़ दो. नहीं पूछना तो मत पूछो. क्या करूं बताओ. अच्छा ये करूं. ये कौन सा तरीका है. In the though that may be at the spur of the moment heat of the argument or maybe a point of expression. आपने किया क्या. At that point you have agreed to something which you basically don't agree to. मन में बिल्कुल आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपने एग्री कर दिया है. कैसे बढ़ोगे आगे. उसमें क्या हो गया. you have lost on both counts. The family growth is also restricted because you yourself have restricted your growth. अगर तुम नहीं बढ़ोगे तुम्हारी फैमिली कैसे बढ़ेगी. अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. अरे क्यों नहीं सोचा. गुस्से में बोल दिया. हाँ बोलो क्या करूं. मैं नहीं करता. मेरे को मत पूछ कुछ. है ना ये आम आर्गुमेंट हमारे घर में दिखते हैं हमको. मेरे को कुछ मत पूछो. तुमको जो करना है करो. ऐसे कैसे करो. if you are on the right track, if you wish that this is what you want and this is what is correct, you should express it. It is not necessary that at the spur of the anger you accept it. Expressions, words, you should value the words ना. नहीं तो ये डायलॉग तो हर घर में है. अच्छा तो तुमको जो अच्छा लगता है वो करो. मेरे को मत पूछो. क्यों नहीं पूछू यार. तुमको ही पूछूंगा. Because it is your life. If you are going further, then you are taking the family further. So you cannot just show off your responsibility. ठीक है तुमको जो करना है वो करो. अरे ऐसे नहीं कर सकते. करना भी नहीं चाहिए. Because this will lead to rejection, disappointment, failure. क्या होगा. मन में हमेशा रहेगा मैं सच बोल रहा था. अच्छा ही बोल रहा था. सुना नहीं उसने. ये भी डायलॉग कॉमन है अपने घर में. वजह नहीं ढूंढी हमने कि हम डायलॉग ये क्यों बातें करते हैं ऐसे. वजह यही है कि हमने उस सही टाइम पे सही एक्सप्रेशंस नहीं दिए. गुस्से के मारे हमने बोल दिया मत करो जाओ. ये कौन सा गुस्सा है. वेर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर फ्यूचर. ये कौन सा गुस्सा है. वेर यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर फ्यूचर and hence the growth of yourself and hence the growth of your family. So it's of no use friends. You have to express. This limiting belief can stem from various circumstances or sources such as ऐसे अभी जैसे मैंने अभी आपको कहा some dialogues पिछले experiences है. war of words घर में होता है ना हमेशा. तू मैं और फिर हम छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ते हो. that is where we are going wrong. We are not addressing our the limiting belief. सो पास्ट एक्सपीरियंस से रिजेक्शन का फेल्यूर है. फेल्यूर का प्रॉब्लम है. रिजेक्शन होने का प्रॉब्लम है.
नहीं मैंने कहूंगा तो वो मेरे सुनेगा ही नहीं, ये तुमने ही तय कर लिया, बोला क्या? यू सी द वे यू टॉक इज कॉलिंग फॉर द रिएक्शन इन द सेम वे, है ना? आप जिस तरह से बात करोगे उसी तरह से आपको वापस आने वाला है वो। सो व्हाई नॉट टॉक इन अ वेरी अमाइकेबल वे, विन विन सिचुएशन, ये करना चाहिए। नहीं होता है तो ये आप इनग्रेन क्या कर रहे हो, अनवर्दीनेस, अपने आप को वैल्यू कम कर रहे हो खुद ही, किसी और ने नहीं किया है, आपने खुद ने ही बोल दिया। नहीं सुनना तो मत सुनो, तुम्हारा जो करना है तो करो, मेरे को मत पूछो। किसने कहा? तुमने। क्यों कहा? नहीं पता, गुस्सा आ गया, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दिया, सेल्फ वर्थ गंवा दिया। अच्छा क्या था? इफ यू आर एनालाइज द थिंग्स, if you are true to yourself, if you are aware that whatever your thought process is the correct thought process, you should be able to convince the others, not give up on what others say just because anger or reactions. No, friends, you should not, because you are compromising, in a way you are compromising your future. अगर आपकी इच्छा नहीं है कुछ काम करने की, आपको पता है कि इस बिजनेस में आप अच्छे हो, since we are also dealing with the things, we are aware of our strengths and weaknesses. If you are aware of the strengths, you should be able to show your strengths. नहीं तो हमेशा हम कहानियों में जिएंगे। मैं तो पहले भी बोलता था ऐसा होना चाहिए, तो तब क्यों नहीं किया? है ना, आमतौर पे हम दिखते हैं रिटायर होने के बाद आदमी किताब लिखता है, मेरी जिंदगी में ऐसा। अरे भाई तू जब जिंदगी जी रहा था तब क्यों नहीं किया? अब लिख के क्या फायदा? चलो लोगों को भलाई के लिए कर रहे हो, क्या कैन आई एग्री दैट? To some extent, I can agree, but I will always say that you should have worked rather than writing yourself some stories of your failures. You should tell the people what you were successful about. और तभी कह पाएगा जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा, वर्थ रहेगी, कन्विंस कर पाओगे, then your book will also will be sellable. See, people like the successes, है ना? अभी फिल्मों की बात करें तो हीरो जीतता है तो हमें अच्छा लगता है, हीरो हारता है तो हमें बुरा लगता है। वो वास्तविकता हम तो उसमें है नहीं, बट वी रिलेट द स्टोरीज टू अवर सेल्व्स, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रेंड्स। इफ वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर ओन वर्ड्स, आवर ओन फीलिंग्स, वी आर अनेबल टू रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो, क्योंकि हम उसी में जी रहे हैं। अरे अभी क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसमें ऐसे ही बैठे रहोगे तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। So the impact of this belief is significant because it can prevent you from pursuing your goals. अब गोल डिसाइड किए थे, लेकिन अब ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सवाल पूछ रहे हो ये खुद को पूछना चाहिए। तुम बता रहे हो लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से मत पूछो। डोंट, देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग मी व्हाट आई वांट। क्यों भाई, करके दिखाओ। Fulfilling their pursuing the goals, asserting their needs and boundaries, and ultimately fulfilling the potential. ये गोल नहीं हुआ, पोटेंशियल से रीच नहीं किया, बाउंड्रीज को पार नहीं किया, तो कैसे जियोगे? नहीं कर पाओगे। Overcoming this limiting belief involves challenging the validity of and exploring alternative perspectives. You have to find a way out to this solution, this problem. Otherwise, there is nothing you can help for. This may include building self respect, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंटली मूव ऑन होना चाहिए, सेल्फ वर्थ होना चाहिए, रिफ्रेमिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस लेके बैठ के हमको रोने से तो फायदा है नहीं ना, रिफ्रेम करो। फेलियर हो गया, ठीक है, सीखो, इंप्रूव करो अपने आप को, दैट कैन हेल्प यू आउट। दिस में बी वन ऑफ द स्टेप्स कि रिफ्रेम कर दिया, चलो ठीक है पास्ट हो गया, आई कैन नॉट जस्ट लिव इन माई स्टोरीज, I will try to improve on them, increase my self-worth, and gradually step out of their comfort zone. अब मैं क्या कर सकता हूँ,
आने दो, अभी क्या ऐसी जिंदगी है, ऐसी मिले, यही बोल के अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो उठना बहुत मुश्किल है. So you have to try. Confidence should be more. Self-worth should be increased. And improve on what you want. You should address this particular question. What do you want in life, or what you want to become in life? Don't be a mere wanderer, friends. So you have to shift this belief and empower yourself to pursue your desires. Advocate you and cultivate more fulfilling and satisfying life. जब तक वो डिजायर पूरी नहीं करोगे, सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं. हमेशा पास्ट की कहानियों में ही जीते रहोगे. पहले रोते रहे, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मैंने फिर बच्चे हो गए, बच्चों को बता रहे हो, फिर पोतों पोतियों को बता रहे हो कहानी. डोंट बी रिमेनिंग इन द स्टोरीज फ्रेंड्स. टेल समथिंग व्हिच यू हैव अचीव्ड. शो बाय योर वर्क, शो बाय योर एटीट्यूड, शो बाय योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट इज व्हाट वी आर अप टू. सो ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है उसे निकालना चाहिए. You have to challenge that irrational thought. You have to take it to the logical end. सवाल पूछो, why, what are you afraid of? अच्छा अच्छा, इस तरह से. Maybe that you are not able to, as I have said, you are not able to put forth in the right words. It always happens when there is a altercation, that is a, difference in opinions, difference in thought processes. There is always war of words. घर में होता है ना, मैंने ये सुना, मैंने तुमने कहा, मैंने कहा, तूने कहा. You have to find a way where you reach the perfect balance for success. So your fear of rejection chala jayega, because then now people will understand that you also have some viewpoint which can be worked on. Possibility तो है, कोशिश करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, इंप्रूव हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ एस्टीम बढ़ गया, नहीं तो लो था. So once we have agreed, take along the people to our say, we are increasing in our self-esteem. Your negative experiences should be used as a tool to improve on yourself. पिछले टाइम ऐसा हुआ था तो मैं करूंगा ही नहीं, अरे ये सॉल्यूशन नहीं है. पिछले टाइम ये हुआ था, now you have to improve on that and then work further. You cannot just say कि नहीं अभी वो हो गया तो ऐसा मैं कभी करूंगा ही नहीं, unless and until it was the wrong thing. Many a times the difference in opinions lead to spat of words, war of words, and one of us states ठीक है मैं नहीं करता. अरे ये नहीं करता नहीं. Have you agreed to that? If not, convince what is the correct way, because that will help you to grow further. Because in this process you are lacking the assertiveness you should have. गुस्से के मारे लाल हो गए, फिर बोल दिए कि नहीं मैं नहीं कर रहा, जाओ तुमको जो करना है वो करो. वैसे नहीं, because then you are lacking assertiveness. In a way you are telling yourself that you are a negative person, that you don't have the proper ideas that could be put forth for. जो आइडिया सबको साथ लेके आगे चलने में, ग्रोथ होने में, कामयाब होने में हेल्प कर सकती है, वो आइडिया यू आर नॉट एबल टू पुट फॉर. असर्टिवनेस नहीं है. सो यू हैव टू इंप्रूव ऑन दैट. दिस स्किल्स है. डोंट रिएक्ट, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग. दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टेलिंग इन माय ऑल वीडियोस. इफ समबडी is having difference in opinion with your opinions, instead of reacting in a harsh way, try asserting in a convincing way. The words carry weightage, friends. Words carry weight. They carry your image. So be very skillful in using the words. Otherwise, you will be believing your own unworthiness. उसने तो कुछ कहा नहीं, गुस्से में आपने बोल दिया तुमको जो करना मेरे को मत पूछो. वो भी बोल दिया ठीक है नहीं पूछता, तो तुम्हारी वैल्यू कम होगी. अनवर्दीनेस तुमने खुद मांगा, उसने दे दिया. Don't reach that point, friends. Never use negative words for self. कभी नहीं. If you are on the right track, if you have the right words, if you have the right things to convince for, then convince with the good words. Show them with the actions.
Success speaks louder. Try it out, friends. Than giving up. In a way, you will be controlling yourself by not reacting, but acting, convincing, and convincingly proving your point than reacting and giving up. मेरे को मत पूछो, नहीं ये मत करना. Never utter a negative word on yourself. कभी नहीं. So these expectations, है ना, ये जो आप बोल रहे हो फिर मेरे को मत पूछो, ठीक है, सामने वाले बोलता अच्छा तुमने ही बोला मत पूछो तो मैं भी नहीं पूछता. That is what you said. That is the expectation should have been a positive way. You should have been able to convince your point in a very subtle and very useful method. That is the convincing by good words, convincing by actions. This will help to remove your negative expectations. अभी जो ये बोल रहे थे, whenever you are talking or whenever you are sharing your ideas with anyone, now the other people will also say, you can ask this person. He might have some solutions to it. So the negativity, मेरे को मत पूछो, अरे उसको मत पूछो, वो बोलता नहीं कुछ, गुस्से वाला है. He say now you are moving to, yes, he has got the ideas, he can help you out from this situation. This is the positivity in you that will be reflected and taken forward, friends. That will help to success. So you should have that determination that I will be out of the comfort zone. You should have the determination that I will be able to convince my point through all the challenges and I will prove them by my actions. इसीलिए तो मैंने कहा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत की बात है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत की बात है? गर हौसले बुलंद हो, गर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी झुक जाती है. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.